अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन। ये लास्ट टाइम भी एक आया था, ये वर्ड जॉइंटली, इसका मतलब क्या आता है? डायरेक्टली। यहाँ पे जब भी आएगा तो आपने जो भी है उसका रिलेशन आपने डायरेक्ट का रिलेशन बनाना है। सो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। If the cost of, so C is directly proportional to ND and C is equal to KND. Proportionality sign खत्म किया, constant हमारे पास equation बना है. Now we are given the value of N is equal to 800 and C is equal to 286,000 and D is equal to 13 days. So put in equation 1 we get value of K which is 55 by 2. Now put the value of K in equation 1, so we get C is equal to 55 by 2 ND. Now we have to find the value of C when N is equal to 600 and D is equal to 18 days. So put the value of N and D in equation 2, C is equal to 55 by 2 into N कितना हमारे पास 600 into D कितना 18, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय 2, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा C is equal to RS 297,000. सो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।